Hello, a warm welcome to my channel today. So here I am today giving insights regarding some statistical functions in Excel. The first common statistical function is count function. This function counts all numeric values in the data excluding blanks. So it means this function can handle up to 255 arguments. There is one important thing to note that the count function ignores the logical values true and false, and it also ignores the text values and empty cells. Means you are here only to count the numeric values. You are not here to count your text values or the blank cells. And it also ignores the logical values true and false. So here's an example for you. Suppose the data is given to you, and here the count function has to be applied. So when I apply the count function here, so the formula is equal to count. The syntax is value 1, value 2. So you will here select the range. So I have selected a range from A9 to A21. Okay. So when you will get the result, it is represented as 11. And manually if you count, so you will count 3, 25, 4, minus 25, 50, 2, 12. You will leave A16 because this is empty cell. And I have just told you कि count function में आप empty cells को ignore करते हो. You will also ignore this any. This is not applicable. So you will also ignore this because this is represents your text. Only the numeric numbers has to be counted. So this represents 11. Okay. There is another example for you. Suppose he has given you apple 11, the date, and then the currency. Okay, so I have applied count function here that equal to count F8 to F11. तो इसमें क्या क्या count करेंगे? 11, of course this is numeric, date and your currency. However, the apple text. So मैंने आपको भी बताया था कि count function जो है वो text values को ignore करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3. Is this clear? But there is some important note in count function, like if an argument Excel count formula is a cell reference or range, तो सिर्फ क्या क्या count होगा आपका? Numbers, dates and times. जो blank cells होंगे या कुछ भी सेल में कंटेन होगा आपका एनीथिंग, जैसे मैंने आपको भी एनी लिख के दिया था, या ब्लैंक सेल्स कुछ भी होगा तो भी इग्नोर होगा एक्सेप्ट न्यूमेरिक वैल्यू. लेकिन अगर आप खुद टाइप करोगे वैल्यूज इनटू द एक्सेल काउंट आर्गुमेंट्स, लाइक मैंने खुद टाइप किया एप्पल, then मैंने टाइप किया नंबर, सम नंबर, और द बुलियन वैल्यूज रिप्रेजेंट योर लॉजिकल वैल्यूज, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स. तो इस केस में नंबर्स, डेट, टाइम्स, बुलियन वैल्यूज जो हम ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, या अगर नंबर्स को आप टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की तरह करोगे, मतलब 5 है और इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हो, तो वो काउंट होगा. अदरवाइज कोई भी टेक्स्ट काउंट नहीं होगा. तो इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने खुद काउंट फंक्शन अप्लाई किया और मैंने खुद टाइप किया, लाइक मैंने एप्पल काउंट किया, टाइप किया, देन मैंने डेट टाइप करी, मैंने ट्रू टाइप किया, एंड मैंने 3 विच इज योर नंबर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट. तो यहाँ पर आपका क्या क्या काउंट होगा? आपकी डेट काउंट होगी, यस. आपकी बुलियन वैल्यू ट्रू काउंट होगी, यस. योर नंबर विच इज इंक्लूजिंग एंड योर कोटेशन मार्क्स, ये भी काउंट होगा बिकॉज दिस इज टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर. लेकिन एप्पल नहीं काउंट होगा क्योंकि प्रॉपर टेक्स्ट है. तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? 3. Okay, so this is all about your count function. Okay, there is another example which I have taken from count function. Like अगर आपको बहुत सारी सीरीज दे रखी हुई है, B की जनवरी में सेल्स गिवन है, देन C कॉलम में आपको फरवरी की सेल्स गिवन है, एंड सो ऑन. मार्च के सेल्स आपको D कॉलम में गिवन है, एंड आपको काउंट करना है B वाला कॉलम का और D वाला कॉलम का. तो अभी डिफरेंट एरेज हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं, तो इनका मैं काउंट फंक्शन क्या लूंगी? इक्वल टू काउंट. क्योंकि आपके सिंटेक्स में क्या होता है? वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3. तो ये वैल्यू क्या ले रही है? आपकी रेंज ले रही है पूरी. सो जनवरी में क्या लोगे? B2 टू B7, देन कॉमा D2 टू D7. अगर मैं आपका मैनुअली काउंट करती हूँ तो क्या आएगा? 1, 2, 3. ब्लैंक से ये काउंट नहीं करेगा. 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो योर आंसर वुड बी इन काउंट फंक्शन विद 9. आप एक्सेल में परफॉर्म करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर. ओके, so this is